mindset of the examiner. Most of the questions that you see in competitive examination are repeated based on the previous year question. Why so? Because it's much more easier to copy the questions and thereon reframe it a bit instead of preparing completely new set of questions. During the screening round of question selection, there are very high chances it's going to get disqualified. Okay. So what happens is there's a proper panel, almost 7 to 8 examiners are there, and they are given a task to prepare all the questions. Now what they do is that they refer to the previous year questions, reframe these particular questions in different language. Also, they try and see which kind of topics have been coming in, and the same topics are being introduced in the new set of questions. Thereon, this is submitted to the final panel. There they select and screen out that, okay, this question we can add in our examination. Now, this is exactly the process that is being followed. Now, think of a fact that you might have seen that 10-year question paper is something that every topper will suggest you before appearing for the exam. Why is it so? Because you will see that 80% of the examination is completely based on these particular previous year questions. Okay, let me show you a live example right away. So, just see the questions in here. Do you see some kind of similarity? I'm pretty sure you might be able to see that. So this is exactly how the questions are framed. Now, as you know, what is the kind of mindset that any of the examiner has? I'm pretty sure अब आप समझ पाएंगे कि exactly मैं आपको किस तरीके से आगे guide करने वाली हूँ. So guys, I'm Vaishalli. I've been All India Rank 26, Serious to 2018. I've also been Afcat Topper, had been 5 times back-to-back recommended. So basically, whatever you're dreaming of as of now, I've already achieved, and I feel that I can help you out in that because, you know, getting the direct inputs from the topper, as in what exactly they followed, what strategies were there. I'll not keep even a single secret from you. I will discuss each and everything मैंने कैसे prepare किया, because you are left with just 50 days, and today if you start wasting your time into hard work, I'm pretty sure you'll not be able to clear the examination. And even if you clear, you know, hardly by few marks you will clear it and then merit out हो जाओगे. So it makes no sense. Let's do smart work. Let's analyze what comes in examination. There are few methods that I've followed throughout my preparation, and I'll share one by one har ek cheez and just follow it out. That's it. Now coming to the first thing, that is study the examination before studying for the exam. What exactly does it mean? Dekho, first of all, I always like showing numbers because that is how I also get convinced. There was this one video that I posted last time, FOR AFCAT 2023 ki baat hai, and I'm pretty sure a lot of you might have seen this. So, in each and every shift, at least 5 to 7 questions were repeated from this particular video. Mark my words, every shift, that means total 6 shift थी. हर एक में 5 से 7 question अगर repeat हो रहे हैं, almost 30 to 35 questions came from this particular video in which I just discussed 50 questions. And you were in a shocked situation कि मैम, how exactly this happened? कैसे कर पा रहे हो इतनी छोटी सी वीडियो के अंदर इतने सारे टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं? So guys, what I did is I just followed this particular rule that is known as Pareto's rule. It is actually 80:20 rule. Whereas 20% of the topics always, account for 80% of the marks in any of the examination. So the first day that you should be doing is, instead of पता है पूरे 1 या 2 महीने सिर्फ पढ़ते रहना, it's much better that you do the hard work on the first day. पहले दिन बैठो, take your previous year question, take the syllabus, and understand from which areas are the questions repeated mostly. And अगर topic तुम नहीं निकाल पा रहे हो, it's fine. I'll be discussing with you the same thing ahead in the video, while I'll be discussing subject-wise, things and topics and then books. So सारी चीज़ें I'll be discussing in there. Okay. Now coming to the second thing, that is chasing your weakness. This is the biggest problem that all of us have. What we do is that जो भी हमें weakness feel होती है कि I don't know how to do maths well, मेरे marks अच्छे नहीं आते, मेरे GK marks अच्छे नहीं आते. So what should I do is that I should just chase this particular subject, whereas neglecting completely the subjects that are our best. Whereas we should be doing something opposite, because if I talk about FCAT, if you have to score 200 plus marks, आपको exactly कितने क्वेश्चन सही करने हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ 70 क्वेश्चन सही करने हैं. That is it. So if you leave completely one subject, जिसमें कितने आते हैं? Every subject has almost 20 questions. जैसे मैथ्स में 25 in English, 25 in GS and 30 in English, है ना? So अगर आप एक पूरा सब्जेक्ट भी छोड़ देते हो तब भी you are able to score 200 plus marks. लेकिन हमें सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है. हमें क्या करना है कि जो अच्छे एरियाज है, जैसे जिसमें we are able to score around 60-70% marks, we have to make sure in that particular section हमारे at least 80 to 90% marks आए. जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, जिसमें माइट भी हम 50-40 पे थे, वहाँ पर हम इतने एफर्ट्स लगाए कि हम एटलीस्ट 60% to 70% मार्क्स लाए. तीसरा सब्जेक्ट 50% भी चल जाएगा, और जिसमें हम बहुत वीक है 40% भी चल जाएगा. बिकॉज दिस इज हाउ क्यूमुलेटिवली यू विल बी एबल टू अचीव दैट 70 प्लस क्वेश्चंस का स्कोर बहुत ही आराम से. ठीक है.
सो अब आपको क्या करना है कि आपके जो सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, यूजुअली क्या होता है रीजनिंग में मार्क्स बहुत आसानी से आते हैं, देन ऑल्सो जीएस में देर आर पर्टिकुलर टॉपिक्स जहाँ से बहुत इजीली मार्क्स गेन हो सकते हैं. टॉकिंग अबाउट इंग्लिश में कुछ सेक्शंस बहुत टफ हैं, जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुए, एंड आप उसमें जितना टाइम इज टू बेनिफिट रेशो देखोगे, अगर आपने उसमें 15 मिनट लगाए तो आपको शायद वो वर्ड आए भी ना एग्जाम में. वेयर एज अगर आपने वही 15 मिनट इन्वेस्ट किए होते अपने किसी मैथ्स के टॉपिक को इम्प्रूव करने में, तो आई होप आपके मार्क्स ज़्यादा बेटर बन पाते वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान इट आउट कि अगर मैं आज दिन में 3 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो माई मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज गोइंग इन टू स्टडिंग दैट सब्जेक्ट. जो मेरा अच्छा है मुझे उसको बहुत अच्छा करना है, एंड जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके यहाँ तक लेके आना है. ठीक है, कमिंग टू द थर्ड थिंग नाउ, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिविजन. व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिलीव मी, व्हेन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू सजेस्ट 5 different books, I also used to feel like going and purchasing each and every book that they've suggested and start with the preparation. But that should not be the mindset. The mindset should be that I just carry on. अगर हर सब्जेक्ट है, हर एक की एक बुक ली मैंने, and that is it, and be very very much secure. If somebody is coming and telling me follow this thing, follow that thing, हमें इतना rigid होना पड़ेगा that नहीं, I know what I'm following because I've done my research and these are one of the best books or the resource that I have been following. Okay, why? Because 50 दिन में जो आप पढ़ने वाले हो उसको फाइनली आपको 50 days के बाद रेसिप्रोकेट करना इन द एग्जामिनेशन बाय टिकिंग द राइट आंसर. बट इफ यू हैव बीन रीडिंग 5 मल्टीपल बुक फॉर वन सिंगल टॉपिक एंड तुम्हें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग सो मच, आई डोंट थिंक यू विल गेट गुड टाइम टू रिवाइज इट. एंड इफ यू डिड नॉट रिवाइज इट, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी ही नहीं है. एंड अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनी, guys, you will be doing so many negative questions in your examination. मतलब इतने negative marks attract करोगे because the questions that you'll be attempting, आप सोच के यही करोगे that I've done it right, and then lot of people regret after coming from exam that यार मैं तो सही questions करके आया था. There is some problem in the marking system, etc. I should have cleared the examination, whereas you don't understand the strategy that you've been following was completely wrong. आप question practice ही नहीं कर रहे थे. आपका दिन का जो time है, it should be divided into 3 good equal parts. First part should be आपने जो भी नया टॉपिक उस दिन पढ़ना है. द सेकेंड पार्ट शुड बी जिसमें आप चाहे अगर आप 1 घंटा नया टॉपिक करने में दे रहे थे तो आधा घंटा आप दे दीजिए when it comes to the revision section and revise very very properly. Okay, and then comes the next important part, that is question practice, because हम यहाँ पे जो एग्जाम देने वाले हैं, this is going to be an examination where you will be ticking the right answers, right? Whereas हम जो एग्जाम स्कूल में देते थे, कॉलेज में देते थे, इट वॉज कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम. हम याद करते थे, वी यूज्ड टू राइट इट डाउन एंड वी यूज्ड टू गेट मार्क्स. इट इज नॉट द एग्जैक्ट सेम वे जो हम पहले करते आए. सो वी हैव टू गिव आवर माइंड दिस प्रैक्टिस दैट अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं. हमें पहले कौन से मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के करने हैं, इंग्लिश के करने हैं, किसमें मैं ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता हूँ, क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ एग्जाम में पेपर में बैठ के. अगर मुझे 20 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल और मुझे करने 30 चाहिए, तो क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है. ये सब कैसे पता चलता है? यू गेट टू नो दिस आफ्टर यू आर डन विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड दैट टू फॉर गुड नंबर ऑफ डेज. Believe me, I used to solve questions every single day before giving the examination. मुझे अभी खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने सारे question paper दिए होंगे उस time पे. Now coming to the fourth and the most important thing here, that is subject-wise strategy. So this will be a compiled one. Why? Because my batch students will also be watching it, because they'll be planning their 50 days exactly as per to what I'll be telling in here. And along with that, I know आप बहुत सारे different coaching centers से जा रहे हो, या फिर you might be following certain books. Keep on doing that, okay? Along with that, what I am going to tell you in last 50 days, do that as well, okay? So I will be giving you this particular 50 days ka timetable, exactly this. Yes, you have to get it printed, put it right in front of your desk and follow it every single day. Since past 1 month, I've already been running a timetable on the Insight SSB Telegram channel, and believe me or not, like the chaps, while you'll be starting with your preparation, my whole set of people who are already following it will be done with 75% of their syllabus. But you don't need to take tension. तुम्हें मैं उस level पे अपने आप पहुंचा दूंगी. You just have to follow whatever I will tell you. Every single morning I'll be giving you motivation, of course. Then we'll be giving you very short and crisp notes. Just check these notes out. How beautiful they are. You will not find any such notes किसी भी आज तक defense channel से लेके defense coaching center से लेके, you never find something like this, and this is so crisp. It is exactly what I have been studying when it comes to certain topics. This is what you'll get every single morning. Get it printed, and then I will also give you DIY, that is do it yourself. So DIY आपको करना होता है as per to whatever was the topic.
उसको पढ़ के एंड कंप्लीट करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे सेंड बैक भी करते हैं दैट मैम लुक आई एम डन विद टुडेज DIY एंड आई फील सो हैप्पी। I do remember a lot of your names जो बहुत regular and I'm pretty sure you'll get your name in the list. And then at exactly 9:30 we do question practice. So अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें हम यहाँ follow करने वाले हैं. Not only this, you know that on YouTube I always post last minute revision videos, but this time I will be on YouTube a little more earlier, एक महीना और पहले, और आपके सारे subject wise revision मैं खुद से कराऊंगी and will take care of each and everything. Okay? अब हम डिस्कस करते हैं exactly हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, ठीक है? So also the batch students, please make sure that you note down all these important topics and cover them accordingly as I'm going to tell you. Now starting with GK, because first of all you fear it the most, and as I told you in the starting of the video कि 50 क्वेश्चन की वीडियो से bare minimum 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए out of 25. What if I tell you the most important topics जहां से आपके 10 to 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, else जो 4-5 क्वेश्चन है आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा कर सकते हैं, and then at least from 25 question you'll be able to solve 20 questions. Now the biggest mistake is that you pick up one book for FCAT. So FCAT जो है आपको exactly topic wise पढ़ना होता है. You cannot just rely on one book. एक बुक से कुछ नहीं मिलेगा. NCERT doesn't help here because यहाँ पे static और current affair dominant चीजें आती हैं and they are very single liner and very static based. I personally used Google. अरिहंत की बुक थी एक, previous year questions loosened and partially covered each and every important topic because it is not serious कि एक बुक उठा ली और आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा. Also pattern has changed a lot. Now let us discuss how to find these important topics and let me tell you some of the important topics as well. How is via PYQ, as I've already told, important topics in history if you see, just ध्यान से देखना. इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वॉर जो फॉट किए हैं, कांग्रेस के सेशंस जो हैं, ठीक है, इवन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड देयर फाउंडर्स, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी के अंदर एटमॉस्फेरिक लेयर, उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसके बाद ओशन करंट्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देन टॉकिंग अबाउट साइंस, सो साइंस, कैन यू सी हियर 14 minutes की 10 minutes की videos. It's about vitamin and deficiency. It's about the questions that come from logies. Exactly यहीं से question आते हैं. सिर्फ इतने limited topics आपको पढ़ने हैं. That is it. Now also I want to tell you something that new topics have been lately introduced and these are the important new topics. Please complete them. Defense के जितने भी questions हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. 5 question आ रहे हैं exactly exam में out of 25 questions. ये मैं आपका YouTube पे 100% cover कराऊंगी. इसके थ्रू मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है. एक काम करना, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास ढूंढने का टाइम नहीं है, प्लीज डाउनलोड इनसाइट SSB ऐप, गो हियर, क्लिक ऑन द कोर्स, गो ऑन GK. आप वहां पे टॉपिक्स देख सकते हैं. मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं जो भी वीडियोस के हैं. सो जस्ट राइट डाउन दोस टॉपिक्स, सर्च इट आउट विच एवर रिसोर्स यू आर यूजिंग एंड कंप्लीट इट थॉरली. एंड इफ यू वांट कि मैं GK की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, दैट ऑल्सो आई कैन डू, मतलब इन डेप्थ टॉपिक्स के साथ. प्लस अभी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, FCAT GK बहुत ज्यादा चेंज हो रही है. इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, let me know about it in the comment section. Now अगर अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है for GK, on your request I have separately made a course जिसमें literally the books will also not come. If you want, you can just go for it and my guarantee is out of 25 questions, at least 20 questions आप करके आओगे एग्जाम में सही. Now we'll start with the maths. There are all these topics as you see. Now question pattern has changed a lot lately. It is moving towards SSC level. But out of these 20 questions that you see in maths, 5 questions जो होते हैं वो HOTS level के होते हैं और 7 से 8 जो question अगर आप solve करोगे it will be very very lengthy. But 50 to 60% जो questions हैं they are very very easy. जो भी weak हैं उनके लिए ये 50 to 60% जो है ये टारगेट होना चाहिए. ओके, I personally did RS Agarwal for maths. How I did is exactly how we have covered it in the course as well. Because maths जो है हर एक डिफरेंट एग्जाम में आती है, लेकिन सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीट होते हैं और इसी पे हमें टारगेट करना है. ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर दैट वी हैव मेंशन्ड इन द टाइम टेबल, ये आप देख सकते हैं दैट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स. व्हाई? बिकॉज परसेंटेज अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है या फिर टाइम एंड वर्क इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. सेकेंडली, यू आर नॉट इन स्कूल, नो वन इज गिविंग यू मार्क्स फॉर स्टेप्स. सो लर्न कि आपको शॉर्टकट कैसे करना है बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम होगा. एवरीथिंग इज
taught in here, that is बेसिक से पढ़ा के आपको शॉर्टकट कराना, उसके बाद आपके हॉट्स क्वेश्चन कराना, और एवरी इवनिंग आपकी 9:30 टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है. ये जो है, जो बैच में बच्चे नहीं है, दे कैन ऑल्सो गो एंड अटेम्प्ट इट बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट. उसके बाद इसके जो आंसर है वो भी वीडियो फॉर्मेट में ऐप पे अपलोडेड होंगे. इवन यू कैन चेक दिस आउट. जो भी बैच में स्टूडेंट नहीं है, दे कैन ऑल्सो एक्सेस इट. ओके, talking about maths is about numbers. Let's talk about accuracy here. Can you see this particular message? Question as it is from 50 question wale assignment. Question as it is from the test series. How was it possible? Just by using the same technique. Also, once we're done with everything, you'll be given an assignment. आपके live doubt sessions होंगे. So please take a note of it. And everybody who is following कोई और भी resource या फिर RS अग्रवाल, make sure आप इसको topic wise पढ़े exactly जैसे इसमें stated है. Use these particular topics. Coming to English, it is the biggest game player because 30 question आते हैं. सबसे ज्यादा marks gain कहाँ कर सकते हो? It is in the reading section, जैसे कि comprehension, PQRS, because यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी अच्छे से ग्रामर पढ़नी है 2-3 दिन, और उसके बाद दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. दैट इज ऑल. इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैंने पर्सनली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, दैट वाज फ्रॉम एसपी बख्शी, एफकैट और सीडीएस दोनों के लिए. इसके साथ साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट द मोस्ट स्कैरी पोर्शन, व्हाट इज इट? एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, सब डरते हो उससे. न्यूज़पेपर कर लो इज व्हाट एवरीबडी से, मतलब मैंने सबको बोलते हुए यही सुना है, बट मेरे हिसाब से यूजलेस है बिकॉज 2 महीने में पूरी वैकेबी कवर हो जाएगी यार. इतना बड़ा पेपर होता है. डू यू थिंक देयर इज टाइम इज टू बेनिफिट रेशो? नहीं यार, 60% to 70% अगर क्वेश्चन अगर हम कर पा रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम में कम टाइम देके, इट इज द बेस्ट थिंग. Now talking about these particular PDF, मतलब everybody asks me what is the secret behind these PDF because 60 to 70% question come directly from here and from the assignment. How is it possible? The thing is that ये PDF जो है SSC बैंकिंग के most repeated questions को देख के बनाई गई है, और सिर्फ वही कवर कराया और वहीं से क्वेश्चन आता है. बस ये कर लेना, that is all you will need. और अगर टाइम हो तो खुद जाके SSC बैंकिंग और CGL वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेना. that is all. Let us talk about reasoning, one of the easiest topic, and सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने की कैपेसिटी इसी में है. 25 में से आराम से आप 23 से 24 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो. यू विल बी शॉक्ड टू सी एवरी क्वेश्चन कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम असाइनमेंट एंड फुल लेंथ टेस्ट. ऐसा कैसे है? पहली बात, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि एग्जैक्टली आपको कैसे फाइंड आउट करने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अब रीजनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्बल और नॉन वर्बल. लेट अस टॉक ओनली अबाउट द टफ सेक्शन ऑफ रीजनिंग. सिर्फ एक ही टफ सेक्शन है, दैट इज एनालॉगी, जो कि आपके जीके पे बेस्ड, करंट अफेयर पे बेस्ड होता है. इवन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं. इसको इंप्रूव करने का अज्ञान एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा. आई पर्सनली यूज्ड RS अग्रवाल बिकॉज उसने काफी हेल्प की थी, लेकिन वो बुक बहुत बड़ी है, कवर टू कवर नहीं करनी है. हॉट्स में सिर्फ SSC लेवल के क्वेश्चंस करने, कैट वगैरह के लेवल मत करना, जो वो वाले क्वेश्चन है बहुत टफ है. नाउ यू सी द असाइनमेंट्स हियर. ये जो असाइनमेंट्स है, दीज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट इज द मोस्ट रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन. नाउ जैगुआर बैच इज बीइंग रिलीज्ड, 26 से स्टार्ट हो रहा है. 50 दिन में 200 प्लस मार्क्स दिलाना इज माई गारंटी. एंड इफ यू वांट टू अचीव दैट मैसेज ना, कंग्रेचुलेशंस, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है. सो गो फॉर इट. सीट्स जो है बैच में बहुत लिमिटेड है, दैट इज 500, और मेरी जो सीट्स हैं मतलब बैच की यूजुअली 2 से 3 दिन में फुल हो जाती है बिकॉज इस तरीके के जब मैसेजेस, इस तरीके के रिजल्ट आते हैं, हु वोंट गो फॉर अ बैच लाइक दिस? एंड लिटरली इट इज सो इकोनॉमिक, आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना. वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज एट डिसेंट रेट्स. नाउ आई होप दैट दिस वीडियो वाज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज बैक इन दोज डेज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई रियली वांटेड टू लुक फॉरवर्ड फॉर समबडी हु कैन गाइड मी थ्रू लाइक दिस, बट हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा. आई डोंट वांट यू डूइंग द सेम, इसीलिए आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी द गाइडिंग लाइट. एग्जैक्टली, तुम अपनी बड़ी बहन की तरह ले लो, या फिर एक बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह ले लो, वेंटर की तरह, टीचर, whatever you want to take me as, take me like that, and I will make sure that I help you thoroughly. और तुम्हें उस लिस्ट में नाम दिलाना, it is my work, it's completely and completely my responsibility. And also, like, you might have seen this video takes a lot of time, literally बहुत time लगता है. Do like at least if you really like the content, and don't forget to subscribe as well. Why? Because I'll be uploading a lot of important things and I don't want you to miss out. Okay, so let's work smart together, let's get our name in the list, and I'll see you on Telegram now. वहाँ पे हम लोग preparation start करेंगे. Also, all those people who want to join the batch, जिसने अभी तक preparation नहीं की है, नहीं समझ आ रहा कहाँ से पढ़ना है, this is the smartest of work you can do, and I can guarantee you 200 plus because जब इतने बच्चों के आए हैं since past 3 years, I'm pretty sure that आपके भी आएंगे ही आएंगे. There is no chance that you not get the best of result. See you again in the next video.